and everybody started laughing on me, and I just made such a fool out of myself. I'm like, oh God, such a. After third foot, they gave me third footing. उसमें भी सब खराब, सब खराब. They're like, okay ma'am, thank you so much. And मुझे लगा चलो गई नहीं यार, डूब गई है, thank you very much, और मैं चली गई वहां से. And then I took a Santro. धीरे धीरे जब मैं फेमस होने लगी और ट्रेन में लोग मुझे पहचानने लगे, इंदु इंदु, then I took my first Santro and all. So that was a good journey. Welcome to Pink Villa, Karishma, once again. So Thank here you. it's for the segment called My First Shot, जहाँ पे आपका जो first shot रहा है, we want you to take us through that. So now, what was your first shot? Do you remember? कौन सा पहला shot दिया था आपने? मेरा फर्स्ट शॉट अगर आप पूछो तो मेरा ऑडिशन ही था. और मैंने इतना खराब ऑडिशन आई थिंक लाइफ में नहीं दिया होगा. इट वाज फॉर बालाजी. मुझे लगता है मुझे उन लोग से ना वो वीडियो टेप लेनी चाहिए टू सी एग्जैक्टली हाउ बैड आई वाज. लिटरली आई शुड एक्चुअली गुड आइडिया, आई शुड कॉल अप बालाजी एंड आई शुड टेक दी शॉट. इतना मोनोलॉग था और मुझे लगा कि मैं स्टडीज में तो माइंड ब्लोइंग हूँ, रट्टा मार लेती हूँ तो मैं मस्त करूंगी. जैसे ही रोल कैमरा हुआ, लाइट्स ऑन हुई, एक्शन बोला, तो मैं पहला लाइन दूसरे लाइन पे बोल रही हूँ, दूसरा लाइन चौथे लाइन पे बोल रही हूँ, चौथा लाइन कुछ मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी का. मतलब मैं वहां से गई और चिंटू घर पे है, कुछ भी कनेक्शन करके कुछ भी डायलॉग्स बोले थे. एंड दे वर ऑल लुकिंग, आई कुड सी दैट आई एम गिविंग इट टू द कैमरा एंड आई कुड सी एवरीबॉडी इज लुकिंग एट ईच अदर. And what is she talking? Are you understanding anything? So my first shot was a disaster. Luckily मेरे face ने मुझे बचा लिया, मुझे लगता है. जहाँ इतना घटिया ऑडिशन देने के बाद भी I got through Balaji's क्योंकि सास भी कभी बहू थी. Because Ekta ma'am believed in me for some reason. So yeah, that was my first But how shot. many takes did you finally get that take right? Did you get that scene right? कुछ takes No, हुए? after third, fourth take, they gave me third, fourth take. उसमें भी सब खराब, सब खराब. They're like, okay ma'am, thank you so much. और मुझे लगा चलो गई नहीं यार, डूब गई है, thank you very much, और मैं चली गई वहां से. और एक हफ्ते में मुझे बालाजी से फोन आता है. Thank you. Do you remember how? मतलब I'm sure जब आपने enter किया होगा, were you nervous? Were you excited? What was the feeling like when you entered to give that No first excitement. I was only nervous. I could feel my heartbeat. I would literally feel my heartbeat, which is here in my mouth. I'm like, अरे बाप रे, मतलब बंद हो जा. इतनी strong heartbeat और इतनी nervous थी मैं, anxiety, everything. I was very scared also. Imagine मतलब acting करना, और मुझे उन लोग ने बोला left of camera देखो, तो मैं इधर देख रही हूँ. What left of camera? Because we don't know the technical words, no? It was a disaster. I was coming to that only. Did you know where to look, how to look, कैसा था, क्या था, कैसे मतलब? So I have one incident where I didn't know all these technical words and all of that. So there was this technical word called zoom. So when you're talking, the director is talking to the cinematographer and it's like zoom करो. तो अब मैं ठहरी टाउन की लड़की एंड मुझे लगा ओ इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं मुझे. सो आई वाज एक्टिंग. तब तक मैं समझ गई थी व्हाट इज लेफ्ट ऑफ कैमरा, राइट ऑफ कैमरा. आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे होगा क्योंकि का सीन ही कुछ ऐसा था कि मतलब उन्होंने मतलब सीन कुछ हार्ड हिटिंग था और सर ने बोला अशोक जूम. नहीं, ही डिडंट से अशोक, ही जस्ट सेड जूम. और मुझे लगा जूम का मतलब भागो, निकलो यहाँ से, एंटर एग्जिट ट्रेन. And I'm like acting, and he said zoom, and I just left. And he's like, who asked you to leave? So he said, sir, zoom. I thought that's the slang you guys use, and everybody started laughing on me, and I just made such a fool out of myself. I'm like, oh God, such a embarrassing. Do you remember moment the first? Did you watch your first shot ever? कभी देखा आपने वो वापस? And what was the first paycheck you got? Oh, my first paycheck was before acting. I wanted to earn and I didn't know what to do in my free time. And I wanted to support my dad because my dad was sick and he was not earning really great. So I thought I'm good in studies. So let me just take tuitions.
So I took two kids. One was in 4th standard and one was in 5th standard, living around my building only, around in my area. I took tuition classes where I used to teach them maths and I used to teach them English. And मतलब वहाँ का तो बेसिक होता है ना 4th 5th standard का, इतना हाई फाई I couldn't do, but 4th 5th standard was nice. I could do it. So I took classes and my first paycheck was 1200 rupees, 600 rupees each. Wow. And my first ever paycheck I got was for 1200 bucks and I couldn't. एक्टिंग के लिए कौन सा था फर्स्ट पेचेक? क्योंकि सास भी गई बहू थी was my first paycheck, 1500 rupees per day. Really? Yeah. And I was very happy. So ये 1200 मिला, फिर मैं हमेशा मम्मी को दे देती थी that mama please deposit in the check and keep 100 rupees 200 rupees for God and 1000 rupees is for you. तब 1000 rupees was also too much. So mama was like wow thank you beta and this and that. So she used to feel very happy. Then we used to go if you remember town में एक जगह थी fashion lane that Fashion Street. metro के यहाँ fashion street. Yeah. वहां जाकर मैं और मम्मी शॉपिंग करते थे मेरे लिए कि अच्छा अभी कॉलेज में ये कपड़े पहनकर जाएगी और ये फ्लॉन्ट करना. सो आई रिमेम्बर ऑल दोस रोड साइड शॉपिंग आल्सो. आई हैव डन रोड साइड शॉपिंग. सो आई चेरिश एवरीथिंग, you know. I love all those things which I've done in my life and I'm not born with a golden spoon. Thank you God for giving me this experience also. When I was told that आपका per day 1500 रुपए रहेगा, तो मुझे लगा 1500 रुपए. then I'm like 1500 रुपए per day. तो उन्होंने बोला पर डे, क्योंकि वहां तो मुझे एक महीने के बाद 1200 रुपए मिलते थे ट्यूशन में. यहाँ 1500 रुपए पर डे. आई वेंट मैड. हम लाइक 1500. आई सेड कितने दिन काम करना पड़ेगा? तो लाइक 20-25 दिन काम होगा. आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग. आई एम लाइक ओ माय गॉड आई एम गोना गेट सो मच मनी, 40-45,000 a month. I can imagine. Yeah, that is just another level craze now. I went mad. I didn't know how to react. I'm like, Mama, did I just get this? And then I took a Santro. धीरे धीरे जब मैं famous होने लगी और ट्रेन में लोग मुझे पहचानने लगे, Indu. Then I took my first Santro and all. So that was a good journey. I can see when you're even talking about it, there is slight like वो एक अच्छी memory वाला feeling है. So yeah, thank you so much. Bye.